हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NiftyNehal। मेरा नाम है नेहा और आज का वीडियो एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक अमेजिंग वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नया मेकअप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट हो सकता है सही तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना, कहाँ अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट्स, कौन से सही परफॉर्म करते हैं, कौन से सही नहीं परफॉर्म करते हैं, कौन से बहुत ज़रूरी हैं, and especially the pricing, the decent pricing products जो आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आज लाई हूँ एक बिगिनर्स मेकअप किट ऐसे इंसान के लिए जो अभी नया मेकअप स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने उस तरह के प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज that all of these products are below 500 rupees. Yes, they are below 500 rupees, but ये सारे ही बहुत अच्छे products हैं। स्पेशली मैं इन सबको यूज कर चुकी हूँ and they perform really really well. इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज मैं लाने वाली हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स इस किट में यहाँ हैं। जो बेसिक आइटम्स चाहिए होते हैं इनिशियली मेकअप करने के लिए, वो सारे वन वैरायटी ऑफ ईच आई हैव पिक्ड अप। मैं इन सबको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप एक्चुअली उनका एप्लीकेशन करते हैं, उस ऑर्डर में पुल आउट करके आई एम गोना talk about each individual product. As I always say, before starting the makeup, it's very important कि आप अपने फेस को ढंग से मॉइस्चराइज करें। तो सबसे पहला आइटम है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। ये एक बहुत डिसेंट और अच्छी क्रीम है, स्पेशली विंटर्स में। इट गिव्स वेरी नाइस मॉइस्चराइजेशन टू द स्किन, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ड्राई स्किन है। ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है एंड दिस इज अवेलेबल एट ₹220 रुपीज। मॉइस्चराइजेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू बिफोर starting with any kind of makeup. Moving on from moisturization, the next product, and again a very important product, is primer. So जिस primer की को मैंने इस किट में ऐड किया है वो है Maybelline Fit Me Matte and poreless primer. मैंने कैटेगोरिकली ये प्राइमर चूज किया है बिकॉज फर्स्ट पोर्स का इशू काफी लोगों को होता है। पोर सेटलिंग प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। एंड अदर देन दैट दिस प्राइमर ऑल्सो हैज SPF 20। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका प्राइमर की तरह भी वर्क करेगा और सनशील्ड की तरह भी वर्क करेगा। एंड दिस इज अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 424। इसका प्राइस रेंज वेरी क्लोज टू 500 है, बट द क्वांटिटी दैट यू आर गेटिंग इज अमेजिंग। दिस विल लास्ट एटलीस्ट, अगर आप डेली भी मेकअप करेंगे तो 7-8 मंथ्स आराम से आपको लास्ट करेगा। सो दिस इज अनदर प्रोडक्ट दैट आई हैव एडेड टू द बिगिनर्स मेकअप किट। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द बेसिक मेकअप प्रोडक्ट जो सभी को पता होता है यूजुअली, दैट इज फाउंडेशन और बेस। एंड फाउंडेशन और बेस के लिए मैंने चूज किया है ये प्रोडक्ट फ्रॉम लैक्मे। दिस इज लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। अगेन दिस वन ऑल्सो हैज SPF। हमारे प्राइमर में भी SPF है, हमारे फाउंडेशन में भी SPF है, so we are sorted with the sun shield. Why I chose this product is because this is a very nice foundation. This gives a medium to like a buildable kind of a coverage. बहुत heavy coverage नहीं देता है, but I really like the finish of this foundation. ये एक बहुत ही natural और glowy finish देता है। आपने देखा होगा, मैंने अपने काफी videos में भी इस foundation को use किया है। And the best part about this foundation is that it retails for ₹209 या 250. So this is the foundation that I will suggest for anybody who is starting on the makeup recently and doesn't want to invest tons and tons of money on a foundation. Alright, so moving on from foundation, the next step that we do is to set the entire base. हमने फाउंडेशन लगा दिया, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सही से सील करें ताकि वो फाउंडेशन मूव ना करे, बज ना करे, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सेटिंग पाउडर। तो मेरे पास एक ये पाउडर है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ।
आई एम सॉरी फॉर द स्पॉइल्ड पैकेजिंग। ये रिमेल लंदन का मैट फिनिश पाउडर है एंड यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड। आई हैव हिट द पैन, मैं ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर चुकी हूँ, बट आई हैव रियली enjoyed using this. The same product I could not find out online, but Rimmel का ही एक is another translucent or transparent powder which is available online on Nykaa. Again, that also has very similar kind of a finish. I was reading about it. It's from the same brand, and I hope that will also perform equally well. And this also retails at rupees 200. This powder gives a very nice and a light finish. It seals the entire foundation very well. I have really enjoyed using this powder, and that is why I'm recommending this to you guys. So once the entire base is set, the next step that we get on to is defining the eyebrows. And जो eyebrow product मैं आज suggest करने वाली हूँ, that is again from Rimmel London. ये एक ब्रॉ दिस वे आईब्रो स्कल्पटिंग किट है। इसके अंदर दो पैन्स हैं, एक में ड्राई पाउडर है एंड एक में क्रीम फिनिश है, आप जिससे अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। इसके साथ में एक छोटा सा ब्रश आता है। डोंट गो बाय द साइज ऑफ दिस ब्रश, दिस इज सो वेरी यूजफुल। इसके एक साइड में स्पूली है जिससे अपनी आईब्रोज ब्रश कर सकते हैं, दूसरी साइड में एक टेपर्ड ब्रश है जिससे आप फिल इन कर सकते हैं पाउडर। एंड दिस retails for rupees 135. So price point is amazing, the quality is amazing, the packaging is so nice. All in all, I really like this product. The next thing that I do is bronzing और contouring, और जो मैं bronzing product आज suggest करने वाली हूँ, it is from Nykaa. So this is a duo, this is called Conquer and Contour. This has a bronzing powder एक pan में, and the other pan offers a highlighter. So आप contour कर सकते हैं, and the same product will also have a highlighter in it. Again, it's very compact, easy to carry. This one retails for rupees 559. You might be thinking कि मैंने कहा था 500 से नीचे के रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, बट अगेन इस सेम डुओ में आपको एक ब्रॉन्जर और हाइलाइटर दोनों चीज़ें मिल रही है. सो यू डोंट हैव टू स्पेंड सेपरेटली हाइलाइटर के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड इट in the kit. After bronzing and highlighting is sorted, it's time to do the eyeshadow and move on to the eyeshadow. ये जो eyeshadow palettes हैं, these are from Swiss Beauty, and those of you जो आप मेरा channel काफ़ी टाइम से follow कर रहे हैं, you know how much I have enjoyed and used these palettes. These are available I think in a lot of shade ranges, palette number 1 से लेके palette number 8. The best part is कि ये बहुत compact छोटा सा है, and the other thing is every palette has around 9 shades in it. And इसमें nude shades हैं, इसमें bright colors हैं, इसमें coral colors हैं, so every palette has a different kind of a shade range. These colors or these shades perform really well. These are very pigmented, बहुत कम fallout है, काफ़ी decent quality है, and these are available at rupees 224 each. So I think cost wise and quality wise this is a beautiful product. जब हम आई शेडो की eyes की बात कर रहे हैं, so another very important and a basic product that most of us start our makeup with, या हम जब बहुत expert नहीं होते हैं मेकअप में तब भी हम एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को यूज़ करना तो जानते हैं, and that is eyeliner. Personally मैंने if I talk about makeup, the first 2 products मैंने यूज़ करना शुरू किया था, those were, one was lipstick and the other one was eyeliner. So I can understand eyeliner is a very important part of any beginner makeup kit. And here for eyeliner I'm giving you 2 options. One is this one. This one is from Lakme. This is Lakme Absolute Shine Line. ये एक काफ़ी डिसेंट आईलाइनर है, बहुत छोटी सी बॉटल है, इसके साथ में एक बहुत फाइन ब्रश है, सो इससे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके अपना आईलाइनर बना सकते हैं. सो दिस वन रिटेल्स फॉर 224. द अदर लाइनर जो मैं सजेस्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी.
This is again, the packaging is taller than the Lakme one, but very very simple. इसमें भी एक बहुत fine brush applicator आता है. Not sure whether the camera is showing it well or not. Yeah. So इस तरह का brush applicator है, and this one is priced at ₹324. Why I am also suggesting this one alongside Lakme is because इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं. इसमें डार्क ब्राउन है, लाइटर ब्राउन है, ब्लैक है, कॉपर है, ब्लू है, ग्रीन है. सो इफ एट ऑल अगर आप आईलाइनर में कलर्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, सो यू कैन गो फॉर दिस वन फ्रॉम K Beauty. This is also very amazing and a wonderful product. So the last product for eyes is a mascara. And the mascara that I've included today in this look is this one from Maybelline. This is the Maybelline the hypercurl mascara. This one retails for around 510, but मैंने इस किट में इसलिए इसको इंक्लूड किया है because बहुत सारी सेल्स अवेलेबल है मार्केट में, स्पेशली Nykaa, पर्पल, एंड आप इजीली इसको अराउंड 450-400 रुपीज़ में ले सकते हैं. So another important product that every beginner should definitely start using if you're interested in trying on makeup is blush on. And for blush on, I have added this one from Just Herbs. I'm not sure whether the camera is catching it or not. These are two little bottles. This is Just Herbs lip and cheek tint. And they are so easy to use. इसके लिए आपको कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है. You can easily take it from the pot directly अपने fingers पे, and you can apply it on your cheeks. I'm not sure अगर आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं. It is a lovely lovely pink color, and ये एक बहुत ही flawless और बहुत ही light color का effect देता है cheeks पे. And you get a combo of 2 blushes from Just Herbs for rupees around 850. So एक blush आपको cost करेगा 420-25 rupees का. And another amazing part about this is that along with using it as a blush on your cheeks, आप इसको अपने lips पे भी use कर सकते हैं, just like a lip tint. बहुत ही soft and a light color add करता है lips पे, and that is why I'm suggesting a lip tint if you are a beginner for you. Moving on to the last product that's left for a beginner's makeup kit, and that is lipstick. For lipsticks, I have added 3 options in here. There are 3 options that I wanted to add. The first one is this Maybelline Color Sensational Creamy Matte Lipstick. This one is priced at rupees 160 और 180. आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. इसमें ढेरों शेड्स अवेलेबल हैं, अराउंड 20, 25, 30 शेड्स. और इसका फॉर्मूला बहुत क्रीमी है, as the name suggests, creamy matte. It gives a demi matte kind of a finish. This one is in the shade Touch of Spice. So I suggest if you are a beginner and a new person in makeup, try and use some nude but very very nice shades. So this one from Maybelline, a Touch of Spice, is a very popular shade and a very beautiful pinkish nude kind of a shade. The next shade that I want to suggest is from Lakme. This is in the 9 to 5 range, and this is in the shade Red Chaos. Again, it is a very very nice nude daily wear kind of a shade. The name is Red Chaos, but ये कहीं से भी red color नहीं है. ये बहुत ही soft orange based nude color है, and I think this is a kind of a shade जो बहुत सारे skin tones को suit करेगा. So this is another one that you can pick. The last one in the lipsticks is this one. Again, this is from Lakme 9 to 5 range. This is Lakme 9 to 5 weightless matte mousse. This is again a lip and a cheek tint, and this one is in the shade Red Velvet. The best part about this, as I told you, this is a lip and a cheek tint, is आप इसे definitely एक liquid matte lipstick की तरह use कर सकते हैं. And the other thing is you can just dab it on your cheeks and spread it with your fingers, and ये आपके एक
cheek tint की तरह भी work करेगा. And again, this color is very beautiful. This is a pinkish nude kind of a shade. And the good part about these lipsticks is that these are liquid lipsticks, but बहुत comfortable हैं. These have a creamy kind of a texture, बहुत drying नहीं है lips पे, and the lasting power is also better. It's better than the other two lipsticks that I've suggested. So you can try this one out as well. So that's it. All the products that I've shown are done. I've shared everything. Most of the things that I suggested, as I said, perform very, very well. They are from some very good brands. I'd say if you are new to this makeup game, don't be hesitant. Just try it gradually. धीरे धीरे try कीजिए. And I think makeup gives you a kind of confidence. You feel good about yourself, and investing a little bit of time in pampering yourself, ready होने में, you feel good about yourself, and that is what I love about makeup. So all the best to you, and I hope जो products मैंने share किए हैं, you will try using them. That's it for today's video. I will be reminding you all who are new to my channel, अगर आपने वीडियो एंड तक यहाँ तक देखा है, means you really enjoyed it, so please do subscribe to my channel, put down the comments below, hit the notification bell, and you can share it with your friends and family also. Thank you so much for joining in, and see you in the next video. Bye for now.